So another form of requirements elicitation technique is survey or questionnaire. Organizations may conduct surveys among various stakeholders by querying about their expectations and requirements from the upcoming system. Different organizations surveys और questionnaires इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि वो उन स्टेक होल्डर से जो आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम के यूजर्स हैं and all those persons which are directly and indirectly related to that software which we are going to build, उनसे सर्विस कंडक्ट किए जाते हैं और बेसिकली इन सर्विस का मकसद उन स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है और ये एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होंगी जो फ्यूचर में डेवलप किया जाएगा. इट इज़ अ रिटन फॉर्म ऑफ एन इंटरव्यू. हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चनेयर या सर्वेज जो हैं वो इंटरव्यू की रिटन फॉर्म है. देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस टेक्निक एंड दैट थिंग इज़ कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. व्हाई इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस? बिकॉज वी need a lot of time to analyze the responses or the results produced by these stakeholders. So the next technique that we will study is introspection. In introspection technique, requirements analyst imagines what kind of system is required for doing the required job. Introspection technique आपका requirement analyst इसलिए यूज़ करता है ताकि वो इमेजिन कर सके, एनालाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि उसको किस रिक्वायर्ड जॉब के लिए किस किस्म का सिस्टम रिक्वायर्ड है बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट. Introspection is the first and the most obvious method for trying to understand what properties a system should have in order to succeed. इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक हमारी वो पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है या मेथड है जिसके थ्रू हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनमें किन प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है. इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर व्हेन यूजर्स आर नॉट अवेलेबल. इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे? जब हमारे पास यूज़र्स अवेलेबल नहीं होंगे, हम यूज़र से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या यूज़र हमारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहेगा और शोज लैक ऑफ फीडबैक और इनपुट, then requirements engineer can use this technique to imagine the things which he assumes that the user would require. जब यूज़र अवेलेबल नहीं होगा या वो हमें हमारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहेगा या he will not show interest in giving inputs or feedback, then the requirements engineer will use this technique to imagine all of the things or the requirements which he thinks that should be the part of that particular software which we have to develop. So introspection एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूज़र की अवेलेबिलिटी के बगैर हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियर ये इमेजिन करता है कि डेवलप किए जाने वाले सिस्टम में कौन सी प्रॉपर्टीज़, रिक्वायरमेंट्स और फंक्शन का होना ज़रूरी है ताकि उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके. So the next technique that we will discuss here is called the social analysis. Social analysis is also known as observation. Social analysis को हम observation भी कहते हैं. Observation is a process of collecting requirements by observing people doing their normal work. Observation एक ऐसा process है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोगों को नॉर्मल वर्क परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व करते हैं in order to collect the requirements. When people are doing their normal work, we just analyze them and we collect all of the information which we understand. So the person who conducts observation is called observer. This method is used to find additional requirements needed by the user when the user is unable to explain their expected requirements. If still after
इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनेयर्स कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हों जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ ऐसे फीचर्स हों जो आपको ठीक से समझ ना आ रहे हो, तो फिर जो टेक्निक हम फाइनली अडॉप्ट करेंगे दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन कब कंडक्ट की जाती है? जब हमारा यूज़र जो है वो अनेबल हो टू एक्सप्लेन देयर एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। सो खुद हमारा जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर या जो ऑब्जर्वर है वो इस इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में जाके लोगों के कामों की, एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है और सिस्टम को और एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। एंड द गोल ऑफ सोशल एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन इज टू कलेक्ट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सो द सोशल एनालिसिस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो टेक्निक है ऑब्जर्वेशन, it can be of two types. The first one is the passive observation, which is indirect observation, and the second one is active observation, which is the direct observation. The social analysis is carried out without the direct involvement of the observer in the society. So passive observation में हमारा social analyst या requirement engineer या observer जो है वो directly लोगों को जाके उनके काम की नोयत को, उनके नेचर ऑफ जॉब को ऑब्जर्व नहीं करता, बट दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी कंडक्टेड बाय हिडन कैमराज, सर्वेलेंस कैमराज, in order to analyze the activities and tasks which are performed by different users. So we can say the results of these indirect observations are realistic because you know it's a human psyche कि जब एक पर्सन को ये पता हो कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो समटाइम्स वो कॉन्शियस हो जाता है, और फिर कॉन्शियस हो जाने से हो सकता है वो अपने एक्टिविटीज़ या टास्क को ठीक उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह से वो नॉर्मल रूटीन में विद कॉन्फिडेंस परफॉर्म करता हो। द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिकॉर्डेड डेटा। सो सोशल एनालिसिस या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जो डॉक्यूमेंटेशन है which is based on that problem and set of requirements will be prepared on the basis of that recorded data जो हमने hidden cameras के through get किया।